Welcome to Kalingo Tutorial Santikanan Lane near FM College Baleshwar. Online classroom for plus 2 science second year students. So today we will discuss dictionary skill. That means the verb, meaning and sentence. ये जो डिक्शनरी स्किल जोटा हमें आज डिस्कशन करूँ एटा हमर काउंसिल एक्चुअली 5 मार्क आसे गोटे वर्ब रो 5टा मीनिंग देइथिबो एवं 5टा सेंटेंस देइथिबो आमे जस्ट खाली ताको मैच करबा डिक्शनरी अनुसार गोटे वर्ब रो 5टा मीनिंग एवं 5टा सेंटेंस एवं ताको आमे एप्रोप्रिएट मीनिंग रे मैच करबा दिस इज कॉल्ड डिक्शनरी स्किल Let us see the example. What is word number blaze? B-L-A-Z. यार कौन मीनिंग गुड़ाक अच्छे फर्स्ट वी डिस्कस ब्राइट फ्लेम और फायर डबल आई है सडन आउटबर्स्ट ऑफ violent feeling third है shine brightly Ivy fire continuously they suddenly become angry. So there are 5 meanings of blaze. Blaze रे फर्स्ट मीनिंग आसला ब्राइट फ्लेम शिखा जोटा हम कहबा सेकंड फीलिंग आसला आउटबर्स्ट ऑफ वायलेंट फीलिंग रागी जीवा थर्ड रे मीनिंग आसला शाइन ब्राइटली चकचक करबा नेक्स्ट आसला फायर कंटीन्यूअसली फायरिंग करबा नेक्स्ट आसला सडन बिकम एंग्री रागी जीवा एटे दीटा अछि डबल आइटे बसे रागी जीवा भीटा बसे रागीबा तो हमको देखियो पड़ियो कोउटा नाउन कोउटा वर्ब ए सेंटेंस को आगे देखो ए जो गोटी वर्ड रे ब्लाज रे 5टा मीनिंग एवं तळे 5टा सेंटेंस से 5टा रे डेफिनेटली ए वर्ड ही थिबा ए our
guns kept blazing. At the enemy. Next B. He blazed off. Without warning. Next, C. Dry wood makes a good blaze. Bright lights blazed all along the road. E. He left the place in a blaze of anger. He left the place in a blaze of anger. So we see in each and every sentence, प्रत्येक सेंटेंस रे आमने से वर्ड को यूज कराई ए रहला और guns kept blazing, B रे he blazed off, C रे blaze, D रे blazed, A रे blaze. That means we have to see. So in this sentence, ए जो वाक्य रे blazing रे meaning कोटा हमको सेटा लिखिया पड़ियो. Our guns kept blazing away. It means gun ले firing करिबा. एटा आमे एई भली भाबरे डिक्शनरी स्किल लिखि परिबा. ए रे meaning ता कोटा हो. Firing करिबा ला IV, fire continuously. তাহলে এটা হলো IV. Next B. He blazed off without warning. এটি ଗୋଟେ সেন্টেন্স আছে and he left the place in a blaze. এই দুইটা সেন্টেন্সର ডিফরেন্স ହେଲା দুইটা হচ্ছে verb and ଏଇଟା ହେଲା noun. So that ଆମକୁ এই meaning ରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୋଉଟା verb କୋଉଟା noun. ତେଣୁ V ଟା ହେଲା verb, it became angry, ଏବଂ ଏଇଟା ହେଲା noun. So that he blazed off, এটা verb ଅଛି, that means B ଟା ହେବ V. Next, C. Dry wood makes a good blaze. Sukila kata जोटा. That means bright flame. C I. D. Bright lights light up. Shine brightly. meaning bright lights glass all along the road रे रास्ता रे लाइट गुडा को जो शाइनिंग करूची सेटा ता मीनिंग करूची
P. He left the place in a place of anger. Double I. So this is the system of writing dictionary scale. This is one example is there. Next, another example. Another word, draw. Meaning is that obtain from some source. Source. This is the first meaning. Then B. And without either winning or losing. And without either winning or losing. Come or move. This is the meaning of C. D. Attract. E. Taken. That means first meaning is that obtain from some source. B is and without either winning or losing. C is come or move. D is attract. E is taken. Then we will write different sentence. I. Diwali is drawing near. Next, C. Breathe a deep breath. Next, the match. Was done. Next, he drew the amount
from his bank account. E. Limited overs cricket matches draw huge crowd. So we shall see that 5 meanings are there. The word is draw. से draw टाको हमें कितना meaning रे व्यवहार करि परिबा. उटाला obtain different source रो पाइबा. B टाला end without either winning or losing. जितबा बा हारिबा पूर्वरु शेष हो जिबा. Come and move, पाखई आसिबा. Attract and take in. ये जो मीनिंग गुड़ा कहा बुझे हमको देखिए पड़े. So first of all, I. Diwali is drawing near. So Diwali is drawing near in this sentence. ये जो I. So that या भीतर कोटा तार मीनिंग दौचे सेटा को हमको लक्ष्य करिया को पड़िबो. See next, she drew a deep breath. श्वास नबा जोटा. Take in. Means observe. ताले आईटा कहाँ से तो मैच कला हमको देखा पड़ेगा सी से तो पाखे आसवा. डबलाइट आला श्वास नेबा जोटा टेक इन. थर्ड आई. द मैच वाज ड्रॉन. मैच टा ड्रॉ रहबा. ताले बीटा हम जना पड़ी जाउची एंड विदाउट आइदर. Next, IV. He drew the amount from his bank. Up then, A. B. Limited hours cricket matches, draw. Attract. D. ताले ए सिस्टम रा लिखा पड़ो. आईटा मैच कला सी से तो डबल आईटा ई, थर्ड आईटा बी, आई बीटा ए, बीटा ला डी. दिस इज ड्रॉ वर्ड जोटा में लिखले ड्रॉ. ड्रॉ रो डिफरेंट मीनिंग और डिफरेंट सेंटेंस एवं प्रत्येक सेंटेंस रे कोटा कहा से तो तर मीनिंग जोटा कि पटो थो से अनुसार हमको लिखा पड़ो. एटा थला सेकंड एग्जांपल. नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल.
Next, the word graph. A situation needing serious consideration. Situation needing serious consideration, এটা হচ্ছে ফার্স্ট মিনিং হচ্ছে গ্রেভ। বি serious in manner, C whole dog in the ground, in the ground, for a dead body. D death, being dead. A so old, or ill dead. That one is not likely to live much longer. Then we write sentence. I they are string flowers. Flowers on his grave. Is there life beyond the grave? Beyond the grave, third eye. This could have grave consequence. This could have grave consequence. That man has 1 foot in the grave. One foot in the grave.
He looked graph. Then we will discuss that actually the answer first I. There are string flowers on his graph. फूल पकेवा जोटा डेड बॉडी ऊपर फूल पकेवा जोटा स्ट्रिंग तो तार ए आ भितर कोटा मीनिंग आस हमको देखा बस सिचुएशन नीडिंग सीरियस आसु ना सीरियस इंस्पेक्टर नो होल डॉग इन द ग्राउंड फॉर ए डेड बॉडी जोटा गात कोई डेड बॉडी की पोतीवा तले आईटा ना सी नेक्स्ट डबल आई इज देयर लाइफ बियॉन्ड द ग्राफ so that it will see death is the life, that means day. Next, third eye. This could have a grave consequence. तो हमको देखिए पड़ियो मतलब ग्रेव consequence. And that man has a 1 foot in the grave and he looked grave. So that in this sentence the third eye, this could have a grave consequence. So that means situation reading A. Next, IV. That man has 1 foot in the grave. That means so old still that one is not likely to tip much longer. E. Next, he looked grave. In serious B. So these are the answers of this example. So we have discussed different examples and dictionary skill जोटा कि अर्थात गोटे मीनिंग रे डिफरेंट एग्जांपल्स एवं तर सेंटेंस को हमको मैच करना पड़े एनी. If you see the dictionary regularly, we can see the different meaning of the sentence. Every word has a different meaning. Then we have to go through the dictionary. So we definitely develop the dictionary skill. गोटे word रे कौन कौन meaning अच्छी एवं सही meaning रे sentence गुड़ा काम देते regularly dictionary टच रखिबा डेफिनेटली डेवलप होगा. कंटिन्यू. गुड एग्जांपल अच्छी. नंबर 4 एग्जांपल द वर्ड प्रेजेंट. So the meaning is that to be felt strongly. Or remembered for a long time.
Next, V. Happening or existing now. Next, to give something to someone. D, to cause something to happen. Next, E, gift. So these are the meanings of a present. Then we will write the sentence, then we match. Number I, one of my students gave me a beautiful painting. Gave me a beautiful painting. As a present. Double I. Slippery floors in the work. In the work area. Present a hazard to the employees. Next, third I. The memory of our father's death of her is still present in her mind. Is in her mind. He presented me a shawl on my birthday. What is your present address?
So we will discuss the answer. This is the last questions, last examples. So first of all, one of my students gave me a beautiful painting as a present. So in this sentence, present as a noun, not verb. So you have to see that here gift is as a noun. So I means E. This is as a noun. Then slippery floor in the work area present a hazard means problem to the employees. That means to cause something to happen. D. Third eye. The memory of her father death is still present. Means A. To be felt strongly remembered. Next, IV. He presented me a shawl. This is verb to give something. C. Next week. What is your present address? That means exist. Happening or existing. B. These are the answers of the dictionary skill. So I have given already 4 examples and answer. The word is present and here the different meanings and different sentence. तेणु यही दुईटा को मैच करवा तेणु प्रत्येक मैच करने पूर्व आमको देखा पड़े प्रत्येक मीनिंग रे कोटा नाउन एक्जेक्टली जमीती आम ये लिखीचु वन ऑफ माय स्टूडेंट्स गेव मी ए ब्यूटीफुल प्रेजेंट ये भर वाला गेव एंड प्रेजेंट वाला नाउन सो दैट एटी गिफ्ट हूँ नाउन नेक्स्ट आम जो डिस्कसन करवा डबल आईटा जोटा डी है आंसर स्लीपरी फ्लॉर्स इन द वर्क एरिया प्रेजेंट ए हजार्ड सो टू कॉज समथिंग एवं एटा भर रे अछि मीनिंग रे मते टू आरंभ होइछ मीन्स एटा भर एंड एठी मते एटा भर रे थर्ड एटा जोटा दैट मीन्स द मेमोरी ऑफ हर फादर्स डेथ इज स्टिल प्रेजेंट ए सेंटेंस रो जणा पड़ी जाउची टू बी फेल्ट स्ट्रांगली रिमेंबर जोटा कि पुराना कथा गुटे मने पकेबा एवं सेटा मध्य भर विषय रे यूज करा जाय छै नेक्स्ट आईवी ही प्रेजेंटेड मी ए सॉल ए जो दीटा सेंटेंस जोटा कंफ्यूज गुटे आसला ही प्रेजेंटेड मी ए सॉल गुटे आईवी एंड जोटा नेक्स्ट वन ऑफ माय स्टूडेंट्स गेव मी ए ब्यूटीफुल पेंटिंग एज प्रेजेंट ए जो आई एंड आईवी ए दीटा सेंटेंस में डिफरेंस होची आईटा होची नाउन एच गेव इज ए वर्ब एंड आईवी रे प्रेजेंटेड होची वर्ब से मीनिंग रे हमको सेतिके देखियो पड़ियो कोटा नाउन कोटा वर्ब ईटा जेहेतु ता पूर्व टू नाही तने एटा स्पष्ट भाव जाना होची नाउन सो दैट आई ई एंड आईवी जोटा कि मैच करियो पड़ियो आईवी जोटा is a verb that means to give something to someone. So I have given 4 examples. Next we will do a lot. Hello?